Hey my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So today I'm going to share this beautiful neutral tone bridal look for Haldi or Mehendi inspired by Moni Roy. I liked her look so much. Like मुझे Moni का हर एक look wedding function का पसंद आया है. And the products I'm gonna be using today are like my recommendations for bridal makeup, like self bridal makeup. So yeah, if you want to know how I got this look, this beautiful stunning look, then please keep on watching. I get a lot of questions about hyperpigmentation, sunspots and aging, like fine lines and wrinkles and dark spots and glow कैसे वापस लाया जाए. So ये सब skin problems के लिए मेरे पास एक ही solution होगा and that will be a vitamin C serum. So introducing Fur Skin Illuminating Face Serum infused with 20% vitamin C. It has a lightweight consistency. You have to take just 4 to 5 drops and massage it gently in upward direction. This serum has all the goodness in it which you will be needing for a healthy looking skin. It has aloe vera leaf extracts, rose extract, green tea leaf extract and also licorice root extract. It's specially crafted to bring back your radiant glow. ये आपके sunspots को भी reduce करने में help करता है and also it helps reducing the signs of aging. This serum not only prevents free radical damage but also reduces hyperpigmentation. So I'll be linking this amazing product in the description box below for you to check out, and you can use my coupon code, that is Sharmili20, for flat 20% discount on this product from their official website. Link in the description box below. Go check it now. Moving on to the makeup part, make sure to follow your everyday skincare routine, and I'm starting here with a primer, and this is Lakme Absolute Undercover Gel Primer. It's gel primers are basically for every skin type क्योंकि it's a bridal makeup. So I'm using here a liquid highlighter by Lakme. Next I'm going to hide जो भी थोड़ा बहुत darkness है मेरे mouth के around with concealer, and I'm using here Forever 52 concealer. I'm gonna apply it जहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत pigmentation का problem है, and it is full coverage and it's also like 2 shades darker than my skin tone, so it's gonna cover up my blemishes. Next I'm using Forever 52 foundation. मैं shade name description box में mention कर दूंगी. First I'm using here a flat foundation, like flat brush to apply this foundation, and then I'm using a flat top brush to blend this foundation. This is like very full coverage and बहुत जल्दी dry हो जाती है. You have to work very fast. Brides के लिए ये काफ़ी अच्छा foundation है because it's matte and full coverage. Next I'm using Maybelline Fit Me concealer in the shade 20. It's like a highlighting shade for my skin. My original shade is 25. So because I'm doing a bridal makeover, that's why I'm using here a light highlight wala concealer. Next, to contour my face, I'm using here K Beauty contour stick in the shade beige focus, and इसे लेके मैं अपने face को contour करूँगी. I am focusing on bronzing part because Monica face काफ़ी ज़्यादा chiseled and sharp लग रहा था. So next, to set my concealer, I'm using Sugar Loose banana powder, and I'm using here a powder brush to dab it gently. Next I'm using Color Essence bronzer to set my cream contour, and I'm going to blend everything nicely. Next I'm using here My Glam K-Play blush. It has this orangish peachy tone, and I'm gonna apply it and blend it with my bronzer ताकि समझ में ना आए कि मैंने दो अलग अलग चीज़ें apply किया है. Next I'm setting my whole base using Sugar Dewy face mist, and I'm gonna let it dry. For the eyes I'm using here Fruit Pie Filling palette by You Can Be. मैंने इसे purchase किया था from Amazon. It's a beautiful palette for beginners, like very versatile palette. It has colorful shades and also shimmery shades.
न्यूट्रल शेड्स. सो मीन से एक वार्म ब्राउन शेड लेके पहले तो मेरे क्रीज पे अप्लाई करूँगी एंड देन मैं एक बेज शेड को लेके मेरे सेंटर पे अप्लाई करूँगी आईलिड के. नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड ऑन अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. इसे लेके मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस ब्लैक शेड ऑन अ फ्लैट शेडर ब्रश एंड इसे लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, लोअर लैश के एकदम क्लोज. नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन का क्लॉसल आई लाइनर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ थिक लाइन आई लैश को फॉलो करते हुए एंड देन आई एम गोइंग टू मेक माई विंग थिन लाइक या जैसा मुझे समझ में आया यही था. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई शुगर मस्कारा, वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा. फॉर ब्राउज आई एम यूजिंग हियर लैक्मे एब्सोल्यूट आईब्रो पेंसिल एंड मोनिका ब्राउज काफ़ी फुल एंड यू नो डार्क था तो इसलिए आई एम गोना फिल माई ब्राउज एंड दिस इज द डार्क शेड एंड दैट्स इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव डार्क आईब्रोज. सो दिस इज माई complete eye look and मैंने falsies अप्लाई किया है because she has to. Next I'm using Becca highlighter. मुझे ना मौनी की फेस में कोई भी BAM highlighting effect नज़र नहीं आया. That's why I'm using this subtle highlighter by Becca Cosmetics. It's very subtle, like लगता नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया है. Next I'm using this combo. This is Swiss Beauty lip liner. मैं shade description box में दे दूँगी and Mars का lipstick. Like she has a brownish nudish lip liner going on and also बीच में like center part में here she has something warm tone nude peachish orangish tone nude. So this is a perfect combo जो मुझे मिला उसी सेम शेड का. नेक्स्ट मैं भूल गई थी मेरे ब्रा बोन को हाईलाइट करना. सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग माय ब्रा बोन एंड इनर कॉर्नर एंड दिस इज माय फाइनल लुक. बाय द वे ये जो मैंने ज्वेलरी पहना है ये कस्टम मेड ज्वेलरी है एंड इसे बना के दिया है मेरे लिए रेट्रो चिक ज्वेलरी. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक दे दूँगी. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो यू लाइक्ड इट और नॉट, you loved it or not, and so yeah, that is it. I'll see you guys again in my next video. Till then, bye, take care, and I love you all.